वेलकम 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 टू द स्ट्रीम गाइस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम पे। क्या हाल चाल है सभी के? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड फुल बूमा मचा रहे होंगे। तो आज हम काजुआ की स्टोरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमें काजुआ मिलेगा और तब हम जाके आगे क्वेस्ट कर पाएंगे, आर्कन क्वेस्ट वगैरह। तो आज हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है। ये हमारा मेन टारगेट है। हेलो हेलो शेडू भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या बात है शेडू भाई, ऑलवेज ऑन टॉप। इधर चैट में सबसे पहले हेलो शेडू भाई का आ जाता है, वेलकम। और अब हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट टाइम There's no need to ने exchange जहाँ छोड़ा था। pleasantries. It's rather pathetic स्टोरी to को force a कंटिन्यू करने के लिए। conversation just to occupy silence. और मैं यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पे कुछ मिशन चल रहा था जो कि मैंने कर लिया है। ये देखो जो इवेंट चल रहा है ये वाला। और ये गेम मैं सीख गया हूँ वैसे, मतलब उतना नहीं सीखा बट ये वाला गेम में सीख गया हूँ। मैं अच्छे खासे स्कोर किए ये देखो। हालांकि दो बार ट्रायल में हुआ है ये, पर मे भी आगे टफ आएगा थोड़ा सा और। पर काफ़ी चीज़ें मैं सीख गया हूँ इस गेम के बारे में, जो गेम के अंदर जो गेम है ना। और ये काफ़ी मज़ेदार भी है भाई। पर ठीक है, हमें इससे काफ़ी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा डेली मिशंस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी काजुआ की बिना किसी देरी के। चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज स्टोरी में। काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है काजुआ और मुझे इसकी स्टोरी को देखकर और मज़ा आएगा कि क्या होगा एक्चुअली में, होने क्या वाला है। Quit following me. एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं ना यार ये वाला कैरेक्टर तो मतलब काफ़ी बढ़िया है यार। ये वाला कैरेक्टर धमाकेदार है। Quit following me. तो इसकी स्टोरी भी धमाकेदार होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो It's been a while since we first set foot on Inazuma. हम्म So many things have happened since then. एज इफ इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? वेट अ Huh? मोमेंट। What's up? ओ ये कौन है? Hey, what the heck was that for? अरे Doesn't want to talk, huh? Alright, let's get ओहो, into the calm down a little. काफ़ी भाई ये वाला थोड़ा सा अजीब सा है। इसकी स्वॉर्ड इलेक्ट्रो वाली भी नहीं लग रही है, How कुछ तो amusing. अलग ही लग रहा है ये। और फायर वाली भी नहीं लग रही है। इलेक्ट्रो वाली है क्या? इलेक्ट्रो वाली है ये भी। पर हरा दिया हमने उसे। So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. क्यों चौंक गए? At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. ये तो भाई बढ़िया लग रही है यार इसकी स्वॉर्ड है। Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like Kazuha. you. I've also heard that he possesses an animo vision. Okay. Why are you looking for That's him? none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. ये ऐसे ही चढ़ गया था भाई, बेमतलब What में the ही मारने heck लगा is था। this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase.
को भी पसंद नहीं आया भाई, आके बस तलवारें मारने लगा। ये क्या Well, बात one होती है? ये thing's कोई for बात होती sure. है? No way are we telling him anything about Kazuha. कोई ना, ये लोग तो Right? मिल चुके थे ना Paimon पहले has a feeling, though, क्वेस्ट में। that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. कोई ना भाई, हमें पता है, Anyway, just to be on the safe side, we should go हमें find पता है। Kazuha right away and tell him to watch his back. एक्चुअली अ हंच। Oh? What kind of hunch? अब देखना ये है कि कैसे क्या मिलने वाले हैं ये लोग काजुआ से, और क्या सीन कट सीन आएंगे। काफ़ी मज़ा आएगा। आई थिंक दिस गाय मे हैव अ स्पेशल कनेक्शन टू A काजुआ। special connection? You mean beyond already knowing each other? आई कैन से फॉर श्योर बट Hmm. Yeah. Maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. ओके। फाइनली एक्ट स्टार्ट हो गया है। गो टू रियोटो एंड लुक फॉर काजुआ। अब काजुआ के पास ही जाना है हमें। काफ़ी मज़ा आने वाला है। The wind rises. यहाँ पे उसकी बोट आती है ना मॉन्स्टेट से, उसमें ही रहता है ना वो। Hey! Hello? Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Who? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. Okay. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Captain Beto. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. It's something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Something about him blocking the Raiden Shogun. Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? You could compare it to the technique Raidu used to strike down. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Oh, Just a little while Okay. ago, this would have been completely unimaginable. that's pretty great thing. The Shogunate probably wants to show some goodwill. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryo Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Tenryo Commission headquarters. चलो भाई हेडक्वार्टर में चेक करते हैं क्या सीन है। Squall and fury. Too slow. काफ़ी फ्रेंडली होके बात कर रहे थे जैसा बताया है, बट मुझे तो कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है कुछ तो। देखते हैं। ये रहा काजुआ। राम राम। अरे रॉकस्टर भाई राम राम। काजुआ क्वेस्ट ये आप Oh? काजुआ you? क्वेस्ट काजुआ का क्वेस्ट होने जा रहा है आज। काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे कट सीन आएंगे मे भी, क्योंकि कैरेक्टर इतना बढ़िया है तो कट सीन भी अच्छे होने चाहिए। Greetings.
We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? I've heard a In thing or short, two. there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार आई ये जय भाई वेलकम टू द स्ट्रीम क्या हाल चाल This is a true honor. देखो आज I am सबसे delighted to be in a position to receive बढ़िया the कैरेक्टर goodwill का of the Almighty होने जा रहा है Shogun and the quest. Shogunate at large. तो देखते हैं बढ़िया बढ़िया सी चीजें होने वाली हैं आज However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. बहुत ही ध्यान से चीजें पढ़ूंगा भाई आज काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. काजुआ के सामने कोई बोल सकता है क्या अरे रॉकस्टार भाई कोई नहीं बोल सकता वही तो बात है शोगन भी कहाँ ही बोल सकती है उसके आगे काजुआ इज ऑफ द बेस्ट यप फ्री स्वॉर्ड क्या बात कर रहे हो रॉकस्टार भाई फ्री का माल मिलने वाला है क्या I sense कुछ some फ्री का मिलने hesitation in वाला है your तो words. फिर तो करना पड़ेगा रे बाबा Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. ये देखो भाई अलग ही चमक नाम लेते हुए Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaidahara really parried the Shogun's strike. काजुआ इज बेस्ट वाइफू रॉकस्टार भाई ये हर कैरेक्टर के लिए नेसेसरी हो गया है क्या हाँ फ्री स्वॉर्ड क्या बात कर रहे हो बस तो फिर Also, लो भाई eyewitnesses saw him using the power of Electro in फ्री addition का to माल that छोड़ of सके हैं Anima. क्या As a result, the falsehood that Kaidahara Kazuha was using a delusion began to spread. ओहो What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. ओहो भाई इतना कुछ That is correct. छुपा हुआ However, है to some people, the idea of a single Qualities. person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. कोई ना भाई सिंगल पर्सन
2 elements. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. आपने तो बोला बेस्ट वैफू, मैंने कब बोला? मैंने ऐसा कब बोला? It will take you 1 hour 30, I did this in 30 minutes. तो मुझे ज़्यादा टाइम क्यों But लगेगा जय भाई? perhaps if the shogunate is willing to ऐसा publicly क्यों? support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? सी यू रीड माई चैट. देखो ट्रोल मत करो, ठीक है ना? वो आपने लिखा हुआ था, आपने ही लिखा था वो. Yikes! We nearly forgot about the most important thing! देखो अभी यहाँ पे ट्रोलिंग हो रही है ना? ये गलत बात है रॉकस्टार भाई, है ना? ये आप मुझसे बुलवा रहे हो जो कि ये सिग्मा. अब देखो, अब आप कुछ बोलोगे फिर बोलोगे कि आपने बोला था. आई स्किप एवरी वॉइस लाइन. भाई जय भाई, यही तो दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत है. इतनी बेस्ट चीज आपने वो मतलब मिस कर रहे हो आप. ये गलत बात है यार, ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा भाई. ये बहुत गलत है. ये चीज Why मुझे would such a इरिटेटिंग dangerous कर देगी भाई. individual ये be looking कैसे for कर सकते हो? me? स्किप कैसे कर सकते हो भाई इनकी बातों को? इतना मजा नहीं है भाई, सास बहू के सीरियल में नहीं है इतना मजा. खैर है तो मतलब थोड़ा सा कम है इसमें, पर यार स्किप क्यों किया? हम्म. No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for ओहो. blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. भाई साहब, ये क्या बात है? क्या बात है? ये लोग, ये क्या करता है? ये टेस्टिंग करता है ये ब्लेड्स की, अलग अलग ब्लेड्स की भाई. Over सही time, है. these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. ओहो, मजा आने वाला है भाई. कुछ अच्छी सी स्वॉर्ड मिल जाए तो. यस, ये सिग्मा काजुआ इज रियली गुड. इट्स यूजलेस. काजुआ कटाना यूज क्या क्यों नहीं करता? Those मुझे नहीं forms are पता quite भाई. different from the more आई practical ones typically हैव used by जीरो samurai in battle. नॉलेज अबाउट So it's दैट. hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed, he sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. Or हाँ भाई, worse. पागल हो सकता है भाई, पागल हो सकता है वो बंदा. ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना. फिर भी काजुआ है यार, In that case, कुछ ना I उखाड़ will सके send है some वो. men out immediately to search for him. हम्म. काजुआ मेक्स ग्रुपिंग एंड एबेस इजी. ग्रुपिंग, हाँ भाई वही ना. Thank you. I must say I am now very कल curious रात को about this matter, and I एक will हम लोग also need some ग्राइंड time कर to रहे थे, consider your offer. तो मेगेत्सु भाई के पास काजुआ था भाई. वो एकदम से इकट्ठा कर देता है सबको एक ही जगह पे, है ना? वो कौन सा कैरेक्टर था यार? एक मिनट, वो काजुआ नहीं था, वेंटी था वो. सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक. वेंटी था. उसने एक जगह पे लेके आया वो. और काजुआ भी शायद यही करता है ना? जहाँ तक मैं सही हूँ. अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना मुझे. तो वही है. I will first तो join the traveler in investigating the one who काफ़ी मज़ा आ attacked रहा था her, कल. then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. ओके ओके. Come on, let's go and track down your aggressor.
The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. वेंटी और काजुआ, वेंटी और काजुहा, वेंटी और काजुआ मतलब क्या पूछ रहे हो कि कौन सा अच्छा कैरेक्टर है ये, या मैं कौन सा प्रेफर करूँगा? I skip Venti cause I have Kazuha. भाई देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना तब काजुआ आया था, ठीक है? हमें पता नहीं था बैनर वैनर के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं आइडिया था, ठीक है? यस, विच वन इज़ गुड? देखो यार, मैंने ना वेंटी के बारे में इतना सुन नहीं रखा, बस ये सुन रखा है कि वो लप्पू सा मॉन्स्टेट का बंदा है, तो मे बी काजुआ इज़ बेस्ट। जितना मैंने सुन रखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और बाकी देख तो लिया ही है मैंने, काफ़ी कमाल का है, दोनों कमाल के हैं वैसे तो, पर उसके बारे में तो काजुआ के बारे में ज़्यादा सुन Here, रखा है। we'd like to ask you a quick question. हम्म Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. हम्म Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. वेंटी सक्स भाई, यही सुन रखा है जय भाई मैंने, ये रॉकस्टार भाई, यही सब सुन रखा है मैंने भी, Oh? तो You उस were हिसाब से targeted in an काजुआ assault? लग रहा है मुझे। Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. डैम हेट इज़ रियल रॉकस्टार भाई, मुझे नहीं पता यार, वह तो वही है जो लोग बताते हैं मुझे चैट में, मैं वो मान लेता हूँ यार, Mr. मुझे लगता है कि हाँ Kaidehara आप is लोग सही currently कह the रहे हो। talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. नॉट हेट इट्स फैक्ट्स। ओके ओके, Millions? देखो मैं तो मान Of लेता हूँ ना, Mora? Whoa! जो आप बोलोगे वो So मैं मान wait, लेता हूँ, even at that चैट जो price, बोलती है वो मैं मान you लेता हूँ भाई, ऐसा probably है, still shouldn't. ऐसा है वैसा है कैसा है, जो चैट बोलती है मैं तो ये मानता हूँ वैसा ही है, Please, और accept कुछ my नहीं है। thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. बंदा काफ़ी Sorry, वो I लग रहा got a है, little off topic. What भरोसेमंद। I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I ओहो, wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. वेंटी नीड्स हियर टू ग्रुपिंग, काजुआ डजंट। ओके, मान लिया, Then क्या भाई let's मान put लिया, that connection aside for now. यही होगा। Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads, and I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. योर फेवरेट वॉइस एक्टर इन जेंशन, वॉइस एक्टर इन जेंशन, वॉइस एक्टर भाई, एक्टर के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कौन है डबिंग करता है या कौन क्या है इन सब चीज़ों की, बट एज अ वॉइस पूछ रहे हो तो वॉइस मेरे को लाइक मेच्योर वॉइस है, मेच्योर वॉइस तो वो है जोंगली की, ठीक है? और एज अ सिडक्टिव पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली येलन, येलन में जाऊंगा, येलन और राइडन शोगन अभी तक के लिए।
अंदर से एकदम बिजली सी दौड़ जाती है। If anyone had been out there attacking people, that would बस be आगे जो होता है assault, वो मत in पूछना। which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. करंट के बाद जो चीज़ें होती हैं वो मैं बता भी नहीं सकता कि क्या हो जाता है। That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. बट हाँ, अभी एक नया टक्कर का आ गया है भाई वॉइस में। न्यूलेट की वॉइस उससे ज़्यादा मुझे लगता है डीप है, उससे ज़्यादा भारी आवाज़। I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. सत्तू भाई हैव ग्रेट खली वॉइस। क्या बात कर रहे हो? तो अच्छी बात है ये तो फिर मतलब मैं मेरी वॉइस से ही मतलब सबसे फेवरेट तो फिर मेरी वॉइस हुई ऐसा तो। Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. इज दिस योर वे ऑफ गिविंग प्राइस? वैसे आप लोगों को क्या लगता है कैसी है मेरी वॉइस? सजेशन दे सकते हो। सत्तू भाई वॉइस बेटर देन जोंगली? I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. पता है कुछ चीज़ें In fact, हजम I'm नहीं होगी quite भाई relieved इसके बाद। that you were the one he targeted. हो सकता है मुझे नींद भी ना आए इस सेंटेंस के बाद। डॉक्टर भाई क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। न्यूलेट वॉइस हैज द बेस्ट वॉइस। ओके सत्तू भाई डबिंग कर स्टार्ट कर दो। किस चीज़ की भाई? किस चीज़ की It would डबिंग cause me स्टार्ट कर great दूं? grief to see someone become critically injured or lose their H&M life की, because of H&M की me. है? चिल्लाने लग जाऊं अब मैं जोर जोर से? For the poor victim, this would be a completely senseless क्या crime. क्या करवा रहे हो भाई? सजेशन ऐसे कैसे ऐसे मत दिया Don't करो, मेरे worry, को बहुत we'll सारे find आइडियाज him. आ जाते हैं फिर। समझ रहे हो? ऐसे सजेशन मत दिया करो। It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I हाँ? don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. पायरो आर्कन कौन है भाई? पायरो आर्कन कौन है? Oh, actually, there was मेरे को one आइडिया नहीं है। strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. भाई अभी तो थोड़ा फोकस कर दो, तो मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही। रुको वापस कहीं तो मैं आउट ऑफ वहाँ चला गया, इधर उधर थोड़ा सा। The other animal, Amenoma Yuya is a samurai from a clan। ये देखो Amanoma. नया क्लैन है Now कुछ। there's a familiar name. अच्छा फेमिलियर है, ये कब सुना हमने? बेंटी है फायर और है बैनेट। ओहो बैनेट 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 की आवाज़ डब करूँ मैं? एक मिनट गाइस, कुछ तो हुआ है चैट को। ये क्या हो गया? यार चैट रीट्राई क्यों बता रही है? नेट तो चल रहा है ना मेरा? हाँ चल तो रहा है यार।
एक मिनट गाइज, रिफ्रेश हो रही है मेरी चैट। पता नहीं, एक तो नई नई चीज़ें होती रहती है ना। नेजनाया इज बेस्ट रीजन ऑफ जेंशन। बिल्कुल भाई, जय भाई, मैं भी यही मानता हूँ जैसा आप बोलोगे। ऊपर ऑटो बटन क्लिक करो, ऊपर ऑटो बटन क्लिक करो। अच्छा ये है? अरे फिर वो मैं भूल जाता हूँ यार, मतलब मैं ये थोड़ा सा बातों में लग जाता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा पॉज करके रखता हूँ मैं। Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. Two grown men going missing at the same time. फिर मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा यार, दिक्कत हुआ है, सुनना पड़ेगा। Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. जय भाई, आप क्ले की वॉइस डब करना। जय भाई। I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. फिर मैं कर दूंगा भाई, जय भाई ने अगर किया ना तो फिर मैं कर दूंगा फिर डब। बैनेट की कर दूंगा मैं, जिस कैरेक्टर की बोलोगे उसकी कर दूंगा डब, ठीक है? Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. बेचारा सीधा साधा लड़का है यार, बेमतलब में। लेट्स कंसिडर दिस अ फेवर फॉर यू जी। Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start यू by जी, making some inquiries at the Amenoma smithy. यू प्लेइंग इन हाई और लो ग्राफिक्स? Sounds good. All देखते हैं the अभी, एक best मिनट with your में investigation. दिखाता I'll हूँ, get moving shortly myself. क्योंकि मुझे नहीं पता ये, अगर कई बार सेटिंग्स हो जाती हैं इधर उधर, मैं देखता नहीं हूँ क्या है। लास्ट जब मैंने स्टार्ट किया था इस पर, तब जो सेटिंग्स थी वही है। देखते हैं विंडोड मोड पे क्यों चल रही है ये। एक मिनट, नहीं नहीं, ये क्या फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? अरे मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी। दिख तो रही है ना स्क्रीन? अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, सही हो गया। तो ये हो रखा है अभी के लिए, जो भी है देख लो यहाँ पे सेटिंग्स। चलो, You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If दिख तो रही है someone ना? can't हाँ, handle it, स्क्रीन दिख रही है maybe ना? that's their problem. एवरेज क्लीसिम। मैं करूँगा आर्थर की। अरे बिल्कुल करो भाई, सब डब करो। काम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं एक, ठीक है, डिस्कॉर्ड पे, और एक दिन बैठ के यही सब करते हैं। क्या बोलते हो? एक दिन बैठ Follow के यही me. सब करते हैं, हालांकि लोग पागल तो हो ही जाएंगे इस चीज़ से, है ना? Ah, if ये it चीज़ isn't सुनकर पागल हो जाएंगे लोग, Kazuha. What brings you पर क्या here करें। today? RIP एथर। अरे जय भाई, क्या शक कर रहे हो क्या रॉकस्टार भाई पे? You two know each other? वो नहीं कर पाएंगे ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? Yes, the Kaedahara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. रेडिन रे अच्छा, रेडिन गोकाडेन। आई विजिट मिस्टर टू पे माय रिस्पेक्ट। Ah, let me quickly explain. The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Inazuma. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty shogun, and over time further honed and enhanced by the most talented craftsmen. Yes, Jay, your biggest claim, Rockstar, everyone is not you.
एक दूसरे की टांग खींचना चालू कर दिएगा इस चैट में। Unfortunately, a series of events led to the gradual बस अब यही रह decline गया of था। many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma clan has kept its art alive. भाई एक अच्छी सी स्वॉर्ड दे दो भाई बना के मेरे को, So sad. मैं बता रहा हूँ। It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties. And just as iron sharpens iron, so मुझे लग रहा है कि too अब did टाइम we आ गया learn है ना? much from each other. मे बी इट इज़ अ टाइम व्हेन आई गेट अ स्वॉर्ड, अ न्यू स्वॉर्ड, धमाकेदार। As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। आई हैव ओनली 12 आइज। भाई इससे तो मेरे को वो डायलॉग याद आ रहे हैं, वो वाले सूर्या और उसके फिरोज के, खतरनाक वाले, गर्मा गर्मी। हाँ एंडिंग में मिलेगा, एंडिंग में मिलेगा। अरे भाई As साहब, for the art of the Kaedehara clan, I मुझे लगा believe अभी it's मिलने वाला है, called the Ishin और art. अभी जस्ट मैं एकदम से ऑन फायर हो जाऊंगा स्वॉर्ड लेके, इधर उधर काचा कच मारकाट मचा दूंगा मैं। सत्तू खाओ कुछ रहो। अरे मेंगेसु भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम मोदी सरकार। अरे वेलकम टू द स्ट्रीम, हेलो ब्रदर, हेलो रॉकस्टार भाई। आप इतना कैसे जानते हो? अरे सॉरी जय भाई। इतना सब कैसे जानते हो रॉकस्टार भाई के बारे में? क्या चल रहा है ये? That's right. ये सब क्या Ishin चल रहा art है? strives for complete harmony between blade and mind और from the हमें कैसे moment नहीं that पता? forging begins. ये इन्फॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है? For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. जय भैया क्या बोल रहे हो? ऐसे ही चलता है भाई। जेंशन इम्पैक्ट स्ट्रीम नाइस। अरे वो ही ना भाई, जेंशन ओपी You गेम है भाई। are, without a doubt, the most worthy wielder of an जेंशन Ishin इज blade. बेस्ट। It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, आई सब्सक्राइब। its अरे थैंक यू ideals फॉर and virtues सब्सक्रिप्शन are मोदी alive सरकार। and well. ब्रदर थैंक यू फॉर द सब। वेलकम टू द स्ट्रीम एंड वेलकम इफ़ यू आर नॉट जॉइन ऑन डिस्कॉर्ड। वहाँ पे और मज़े करते हैं लौंडे। यार ये चीज़ मैं क्यों भूल जाता हूँ, रुको मैं यार एक मिनट, अब लिंक देनी पड़ेगी। डिस्कॉर्ड पे लौंडे बहुत मौज मस्ती करते हैं भाई, एकदम फुल टू मीम मीम चलती रहती है वहाँ पे, और अच्छा डिस्कशन होता है, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में, गेम के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, सारी चीज़ें वहीं से गेन कर सकते हो आप। बस आपको ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड, और मैं उसकी लिंक दे देता हूँ, एक मिनट। यानी कि ये लिंक मैं कॉपी, वो लिंक डालना भूल जाता हूँ यार। चलो अच्छा हुआ याद आ गया मेरे को इस चीज़ से। बस एक मिनट You देना, overestimate तक me. इसको थोड़ा कंटिन्यू कर देते My हैं। actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. ओके ठीक है, पिन कर दिया गाइस, जो लोग नए हैं वो ज्वाइन कर लेना। ओके कंटिन्यू करते हैं।
चलो. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. सिस्टम पे बेटारा छोरा जाट का आज Ah, छिए yes. जय भाई. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. But I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. निगाह मारता जय भाई फेमस डायलॉग है. I believe he went to collect the Famous. item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. सिस्टम फाड़ देंगे. नहीं भाई ऐसा मत करना यार. सिस्टम अभी अभी लिया है नया. ऐसा मत करना रॉकस्टार भाई. कल रात की स्ट्रीम पे क्या किया? कल रात की स्ट्रीम पे हमने थोड़ा सा ग्राइंड किया. हमारा एक नया मेंबर है, अपना लॉन्डा ही है, तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड करवाया. उसको थोड़ा सा गेम के बारे में नॉलेज है, बट काफ़ी चीज़ें जाननी है उसको. तो वही हमने सोचा कि जैसे मैं नया था उस टाइम पे, सब लोगों ने हेल्प की, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा आके साथ में ग्राइंड करते हैं. उसको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा सारी चीज़ों का. तो उसको भी ग्राइंड करवाया, मैंने भी किया. और न्यूले को मैं सोच रहा था थोड़ा सा करने का, बट उन्होंने कहा कि सब लोगों ने यही सलाह दी कि अभी रुकते हैं थोड़ा, उसको पॉज देते हैं, बाकी चीज़ों को पहले करना है. उसको भी करेंगे फिर अपग्रेड. तो उस हिसाब से हमने फिर करते गए जो भी कुछ भी कर रहे थे वैसे तो, Yes. पर यही है. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. मेरा इनवैलिड दिखा रहा है, मैं कोई सर्वर ज्वाइन नहीं कर पा रहा. ऐसा कैसे? एक मिनट. ऐसा कैसे हो पाएगा भाई? मैं तो अभी लिंक चेक की है. आप देखो एक बार रीचेक करो. नहीं होता तो फिर एक और लिंक दे दूंगा मैं वहाँ पे उसकी दे दूंगा लिंक, जनरल चैट की लिंक दे दूंगा सीधा. देखते हैं वहाँ से जा पाएगा या नहीं इनविटेशन. ठीक है. आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give मेरा you? स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अभी तक येलन ही है मेरे हिसाब से. तो येलन ही बिल्ड करवाई थी, If I तो had वही है to अभी. guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. कोई भी सर्वर ज्वाइन नहीं कर पा रहा. एक मिनट रुको, मैं दूसरी लिंक दे देता हूँ आपको. टेंशन नॉट. टेक्स्ट चैनल की लिंक दे देता हूँ, ठीक है. टेक्स्ट की लिंक दे देता हूँ, बट कहाँ है? अरे इसमें आ नहीं रही लिंक. एक मिनट रुकना.
यहाँ से जाके एक बार इनवाइट देके देखता हूँ। ये तो सेम चीज़ आ रही है। यार यहाँ पे मेरे को लिंक दे नहीं रहा है, 1 मिनट रुकना जरा। इसको कंटिन्यू करता हूँ। लिंक भी आ रही है। अ, 1 मिनट रुकना गाइज। लिंक आ रही है, लिंक आ रही है। थोड़ी बहुत इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। कोई भी सर्वर ज्वाइन नहीं कर पा रहा। कौन से कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हो? कैरेक्टर पे अभी तो यार देखते हैं। अभी जो बिल्ड का है वो कुकी का है, ठीक है। कुकी का है मेन अभी के लिए। कल हमने वही है कुकी के लिए थोड़ी सी फार्मिंग की, और वहाँ पर हमने थोड़ा सा चीज़ों को सेटअप किया। देखो ये है लिंक। ये वाली लिंक है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। ओके, He is इस वाली लिंक से ज्वाइन करके extraordinarily देखो एक बार। talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. एक तरफ से आलू डालूंगा, एक तरफ से सोना निकले। अरे राहुल भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये क्या चल रहा है भाई? मोदी सरकार और फिर ये कोई ट्रोल। पक्का ये कोई अपने ही लौंडों में से ट्रोल कर रहा है भाई फिर से। ये पहले डोलू और वो क्या नाम है उसका, बोलू, क्या नाम है? अरे क्या नाम है उसका, लड्डू जो खाता है, भीम। भीम और वो, भीम और चुटकी और पता नहीं कालिया आ गए थे। Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems ओ to भाई, match the suspect's profile. What? No, ठीक है, absolutely ये भी impossible. बढ़िया है। He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Oh, Is okay. that so? तो बी अवेयर, आपके चैनल पे रेड हो सकती है। अरे भाई, जय भाई, ये क्यों यार? क्यों ऐसा क्यों करते हो? शैडो है, शैडो भाई। शैडो भाई, Yes, क्या ये if आप there's हो? one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. 2024 में मैं ही जीतूंगा, बिल्कुल भाई। कुछ भी हो सकता है। बैन दे दो इसको। अरे नहीं जय भाई, But, with that said, क्या it's दिक्कत है? equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry, you have our word. शॉर्ट देंगे भाई, From कब the दे रहे हैं? sound of ये that, एंड में ही देंगे बिल्कुल। Paimon doesn't think इतना Yuya was the इतना one एंड who में देंगे attacked क्या? us as well. वी स्टिल नीड टू गेट द इन्फो फ्रॉम द नेगेटिव फैमिली। तो वही कांग्रेस सपोर्टर। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो यही आइडिया नहीं रहता कि क्या चलते रहता है भाई। बताओ, कांग्रेस, बीजेपी, ये इन सब चीज़ों में तो भाई मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ये बताओ। मैं तो ये समझ के ही बाहर है।
बहुत समझ के बाहर है भाई, मैं अभी बच्चा ही हूँ, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, जेंशन खेल रहा हूँ भाई। जेंशन में मैं बस ये कह सकता हूँ कि मैं अभी मेन कैरेक्टर के सपोर्ट में हूँ और मैं इसी को जिताऊंगा गेम में, पूरी कोशिश है और वही उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ मैं जब से, स्टार्टिंग से ही। मैं तो जेंशन सपोर्टर हूँ। नो मोदी इन डिस्कॉर्ड। Yes. भाई सब ज्वाइन कर It लो, sounds as if something happened सबकी when the सुलह two हो men जाएगी, met मैं तो each यही कह other. रहा हूँ। Let's pay a visit to the Nagato household. हमारा डिस्कॉर्ड बहुत प्यारा है ना, इसलिए डिस्कॉर्ड सर्वर इतना अच्छा है कि सारी चीज़ों को भूल के ना लोग सिर्फ मीम्स के बारे में सोचते हैं कि भाई ये मीम डाली तो क्यों डाली। चलो अब चलते हैं सीधा हाउस होल्ड। व्हाट हैपेंड, क्या हो रखा है, ज़रा यहाँ पे भी Too फिगर आउट slow. कर लें चीज़ों को। मैं बोल रहा हूँ शैडो है, अरे बिल्कुल भाई मेरे को पता है ना। Too slow. ऐसी ट्रोलिंग और कर कौन सकता है भाई, इतनी प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल कोई बंदा है मेरे को पता है, बहुत प्रोफेशनल है इस काम में, माहिर I'm शातिर very खिलाड़ी। sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. बच्चे हो अभी राजस्थान में होते तो 8-10 के बच्चे होते आपके। मैं कैसे भाई, ये क्या बोल रहे हो, No, no, you इतने misunderstand us. मैं क्या We करता are भाई, here to मैं help with the क्रिकेट टीम थोड़ी ना investigation. बनानी है। We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? ये आज के टाइम पे तो एक संभालना मुश्किल है। ओ भाई, डार्क, डार्कर देन ब्लैक होल। I'm afraid we don't have अरे any new भाई, information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. इस सब चीजों के बारे में मैं कुछ बोल सके हूँ के? With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's अरे current भाई, situation? क्यों करते For हो गाइस ऐसा, क्यों example, करते हो, मुझे ये बताओ I'm not ऐसा struggling क्यों। to understand why a collector would be strapped for Mora. हेलो सत्तू भाई, अरे गगन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, एक नूब आ गया स्ट्रीम देखने। अरे यार जय भाई, क्यों करते हो यार ये सब, इतने प्यारे Let's बंदे को sum यार up आप the ऐसा ऐसा story. बोलते हो, गलत बात है, Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. ये गलत बात है जय भाई, बिल्कुल नहीं, He'd ऐसा always नहीं get करना so चाहिए आपको। animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how प्लीज जय को गाली दो। enthusiastic and excited they made him, गगन I भाई was इससे happy to ये believe देखो, that they ये were just काम है ना, आपसे extremely बढ़िया कोई नहीं कर important to सकता, him. आप इस काम में प्रोफेशनल हो, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। फ्री में ग्राइंड करना, फ्री में ग्राइंड करने के लिए है, फ्री में ग्राइंड करने के लिए मतलब है। तो भाई प्लीज जय को गाली दो, मैं सुपर चैट दूंगा। अरे नहीं भाई, ये देखो ये प्रोफेशनलिज्म है ना, मेरे पास नहीं है भाई गगन भाई। अरे यार, लेट मी कॉल द एफबीआई। भाई Everything देखो was मैं कह रहा fine हूँ when we first डिस्कॉर्ड got ज्वाइन married, करो। वहां पे but as time went सर्वर by, पे things जाके, changed वॉइस for the सर्वर पे worse. जाके एक दूसरे को प्यार से गले लगा के और जो बोलना है वो बोलो। मेरे को कोई इशू नहीं है। Uh-oh. What happened? अरे सत्तू भाई सरकास्टिकली बोला, अरे कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ जय भाई, He lost his समझ sense रहा हूँ of मैं ये restraint. छेड़खानियाँ। He started buying more and more things,
and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. I know. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse अरे admiring मेरे को his फोकस weapons, करने दो even as गाइस. debt collectors were मेरे को descending समझ में upon नहीं आ our रहा क्या चल house. रहा है अब स्टोरी में. अरे यार. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. तो रूड हो गया स्ट्रीमर बनने के बाद. ऐसा नहीं है. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him. But वो making एक ends meet स्टाइल has रहता to है यार, come सबका अपना first. अपना. वही I've है. tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. जब बोलता है मेरा डाउनफॉल होगा, सून सपोर्ट करो. हैं? डाउनफॉल होगा? क्यों होगा? ऐसा क्यों हो जाए भाई? ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार. इसके डेली 200 व्यूज आते हैं स्ट्रीम पे भाई. लो बताओ फिर कैसे. मैं तो अभी 1-2 ही आते हैं यार. 1-2 मुश्किल से 4 जाते हैं, मुश्किल से 3-4. बताओ कैसे. Oh, And that led to an argument. Actually, it didn't. या भाई आप Generally, प्रोग्रेस कर रहे he's हो, a इसका quiet मतलब ये man है who likes गगन to go भाई. with the flow. On most things, he leaves the decision ऐसा थोड़ी ना making है, to ये me. तो कुछ अलग ही है. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the ये तो debts बातों hadn't में pushed वो our है, family to the brink. कहीं ना कहीं एक लूप होल है. फंसाया जा रहा है मुझे. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. किसी बंगाली को बुलाना पड़ेगा, रिचुअल करेगा. His voice was so meek भाई मैं and क्या pitiful बोलूं. that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? You did the right thing. Had I not ये indulged भाई his bad ये कैसे कह habits, रहे हैं you did we the right wouldn't thing. have found ourselves in such a predicament. मेरे को 200 व्यूज आ रहे होते तो मैं सिर्फ 360 सब नहीं होता. अरे गगन भाई सब कुछ बढ़ जाएगा. देखो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. आपके पास कंसिस्टेंसी है, मेरे पास नहीं है. मैं कभी भी स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, कभी भी कुछ भी कर रहा होता हूँ, तो ऑब्वियसली आपके ऑलमोस्ट जल्दी हो जाएंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी. आपके व्यूज़ भी कांस्टेंट ही रहेंगे, आपके सब्स भी बढ़ते जाएंगे. वही है, क्योंकि आप मेहनत करते हो यार. आप रेगुलर मेहनत करते हो. आपने बताया आप दिन में भी करते हो स्ट्रीम, दोपहर में भी करते हो, रात में करते हो. मैं अपनी चीज़ों पे कंसिस्टेंसी नहीं रखता हूँ, और मैं आपसे सीख रहा हूँ ये चीज़, मल्टीटास्किंग होना. तो यही चीज़ है. And I also don't know if मैं he थोड़ा had थोड़ा सीख रहा actually हूँ. come to his senses or if he was simply angry with me. टीम वैन गगन भाई. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I आज see. स्ट्रीम नहीं कर रहे क्या? अभी आप स्ट्रीम I नहीं कर रहे, इस understand. टाइम पे करते हो ना आप स्ट्रीम गगन भाई. आई सी, आई Ame no अंडरस्टैंड. Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. क्यों नहीं वॉचिंग आती है, फेक सिंपैथी ले रहा है. अरे क्या भाई, वो मेहनत करते हैं यार. वो लोगों के देखो अकाउंट्स लेते हैं, ग्राइंड करते हैं. वो ये बहुत मेहनत का काम है भाई. मैं ये नहीं कर सकता सीरियसली. मैं ये सब मेरे बस की ना है भाई. At first, I assumed they must have gotten into an ये argument over बहुत the मेहनत वाला price. काम है. मेरे से मेरा ही नहीं होता यार. मेरा ही ग्राइंड नहीं होता, बाकी तो छोड़ो. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. जय झूठ बोल रहा है. आज मैक्स 4 की वॉचिंग
थी। अरे मेरी तो कभी नहीं आती। मेरी खुद की वॉचिंग नहीं Maybe आती, he ये तो was चलता feeling the रहता है। pressure from the debts? क्या भाई, मेरी तो डेली नहीं आती। I डेली don't ऐसे ही know. चलता रहता है मेरा। He just disappeared after the warehouse टेंशन burned नॉट। down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. सुबह स्ट्रीम में कोई आता, लेकिन मैं में कोई आता, लेकिन शाम को एफबीआई खुद स्ट्रीम देखती है। अरे अरे भाई, As long as he's willing to turn over a new leaf, एफबीआई। I know we can work कभी मैं things सोचूं out. भाई कि मेरे साथ कुछ टाइम से कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप सपोर्ट करो ब्रो, ये तो पागल है। अरे सपोर्ट की बात नहीं है यार, इसमें जो है वो है, मतलब भाई आप इतनी मेहनत करते हो, सीरियसली लोगे, और मल्टीटास्किंग हो, ये जो बात है वो है भाई। मैं नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं नहीं Please कर don't पाता get हूँ upset. ये सब चीज़ें। There could be more to this situation than meets the eye. मैं बस ये स्टोरी वगैरह करने में If मेरे को थोड़ा collecting मज़ा things आता is है, a स्टोरी habit देखने that में, Mr. Nagato और had his साथ whole में ग्राइंड life, करने में मज़ा आता है मेरे को, it ऐसे is नहीं। quite unusual for this habit to change so drastically over a साथ short में ग्राइंड कर period. सकते हैं, वो चीज़ है। But the information we gathered from the other side suggests ओए Amenoma लस्सी। Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This A little ओ भाई, confusing. More like completely mystifying. लस्सी लस्सी। Let's try a change of scenery and लस्सी see if बढ़िया we can लगती है जय piece भाई को। together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. ये जेंशन 2020 से खेल रहा है। और जय भाई, क्या ये बात सच है? क्या ये बात Based सच on है the कि आप information we've 2020 से खेल gathered रहे so हो? far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse Oh, likely bhai. played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, जय 14 साल का बच्चा है, इसको इग्नोर करो। सबकी सुननी पड़ती है गगन भाई। मैं नहीं गगन भैया। अरे never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. ये चल क्या रहा है भाई? एज के ऊपर लड़ाई हो रही है। ओके, फिर तो मैं 10 साल का ही हूँ फिर। They must have had an argument during the That sale. is the most likely conclusion based on everything we know. What started as a disagreement over the price escalated and ultimately turned into a tragedy. Who said I'm 14? देख लो जय भाई, लीक हो रही हैं आपकी चीज़ें। आपका बायोडेटा लीक हो रहा है कहीं से, देखो जल्दी से। हेलो सत्तू भाई, अरे हेलो गोकू भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। However, in this case, only one of the आज parties गाइस would have काजुआ की started the स्टोरी fire. चालू है, That would make the other party innocent, पर समझने and they कुछ would have नहीं आ no रहा, reason to hide themselves क्योंकि from the चैट पे देख public. रहा हूँ मैं चीज़ों को। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैट में चल रही है बातें हैं। If this is indeed what happened, and the innocent man hasn't come forward yet, then it suggests they may have already lost their life. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. मैं 12 साल का हूँ। गगन भाई, आपने मुझसे झूठ बोला था स्ट्रीम पे, इसका मतलब ओ भाई,
FBI की रेट पढ़वाओगे क्या? 16 का हूँ, 14 का नहीं। मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का जो भी है। और FBI आए तो यानी कि मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब ये है, अगर स्ट्रीम नहीं कर पाया तो समझ जाना कि मैं जेल में हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ तो कहाँ Mr. थे हम? Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? This also doesn't seem connected to the case of the Right. attacker. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events इतनी together. जल्दी स्ट्रीम बंद? भाई जय भाई, ये सब करोगे तो बंद करना ही पड़ेगा मुझे। अपने ये चैट नहीं देखी? कौन सी वाली चैट नहीं देखी मैंने? कौन सी वाली नहीं देखी? गगन भाई की सारी चैट देख रहा हूँ मैं, आपकी भी देख रहा हूँ। कल डॉक्टर जुम्बाजो के साथ फाइट कर रहा था। उसने कल एज रिवर्सल रे से 12 का एज कर दिए। और ये रियल लाइफ में कब से होने लगा? ये मुझे लगा था कि ये जेंशन में होता है कि एज कम दिखाते हैं ये लोग सामने, बट रहती ज़्यादा है, या ऐसा कुछ है? टाइम्स व्हेन एक्टर अर्न प्रैंकिंग। Aminoma Yuya भाई lacks a key distinguishing feature of the attacker, एक्टिंग तो मस्त करते namely हो, that he is principally a practitioner of the blade कमाल की testing एक्टिंग है। techniques of Aminoma art, not those of the combat oriented Ishin art. आई मीन गगन की स्ट्रीम पे क्या चीज़? अच्छा, Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's देखो कुछ starting चीज़ों to का look मेरे को अभी like a आइडिया नहीं चल wild रहा है चैट goose में क्या हो रहा है। chase. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। Let's keep going, since we've come this far. If we can और मेरे को solve the स्टोरी भी case, समझनी है यार, both मैं Mr. मल्टीटास्किंग नहीं Aminoma हूँ। and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a Still a chance we may chance. be able to find some shreds of evidence. ओके, कुछ तो एविडेंस मिलेंगे हमें, देखते हैं कहाँ जाना है। अरे सिटी के पास में ही तो है यार, फिर भी हम टेलीपोर्ट मारेंगे क्योंकि हमसे बड़ा आलसी और कौन है। चलो, आप कहाँ से हो? कौन? मैं? Wait, मेरी बात कर रहे हो क्या? I hear something ominous in the wind. Oh, this must be another one of those sounds that only you can hear. जय भाई, अभी उसको ढूंढ रहा हूँ ताकि ताहू एज का जाऊँ। ये समझा नहीं मैं गगन भाई। सही एज का ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात। मैं MP भोपाल से हूँ भाई, MP भोपाल। As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... I knew we could count on you. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. ये कुछ तो है यहाँ पे आसपास। But there's nothing here. Damn it, Gagan asking for clips. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. आप अभी आपकी स्ट्रीम के साथ डॉक्टर जोम्बाजो के अड्डा ढूंढ रहा हूँ, अपना साइड किक
प्रिंसेस बबलगम के साथ। दुम्बाजों का अड्डा, ये क्या चीज़ है? मैं समझ नहीं रहा हूँ इसको थोड़ा सा। ये कुछ क्वेस्ट It है क्या felt जेंशन very में? much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. हम्म। Indeed, साइड but किक this बबलगम के साथ unexpected मतलब spring वो of inauspicious उसकी energy बात may कर रहे होगे prove to शायद be आप। of benefit to our investigation. साइड में वो जो उड़ता रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? We should remain नाम याद नहीं vigilant आ रहा मुझे उसका and भी। approach slowly. जैसे ये So it's an पाइमोन है ना इसकी, underground वैसे ही कुछ warehouse. गेम नेम। The force is definitely coming from down below. हाँ, गेम का नेम बताओ मेरे को The आइडिया source नहीं of है। the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. हम्म। एक मिनट गाइज, मेरे को एक मिनट देना, मैं ज़रा पानी भर के आता हूँ। कैम बैक। मैं आज अनफिनिश्ड कॉमेडी क्वेस्ट कंप्लीट कर दूंगा। चलो मैं चला सिटी को बचा। मारा को, ऐसी मारा को। सिटी से तुझको बचाना है, अरे वो सबको बचा लेंगे गगन भाई, सिटी को बचा लेंगे। सुपर हीरो है वो। और जो अनफिनिश्ड कॉमेडी क्वेस्ट, ये मैंने सुन रखा है, शायद मैंने किया हुआ है ये वाला। मे बी ये कर रखा है मैंने। Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. प्रिंसेस बबल गम ने है गम ने भी बाय बोला और जय को गाली दे अभी। ऐसा कौन सा गेम है भाई ये जो ऐसा चलता है, जो कि बाय बोल के गाली देने का रिवाज है? It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. सार्थक भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? गगन भाई देख लो, ये ट्रोल कर रहे हैं अब। श्योरली समवन वुड हैव नोटिस। From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the आई एम बैक। Tatarigami's अरे वेलकम बैक unfulfilled शैडो will. भाई, वेलकम बैक। Their interests मुझे कुछ become गड़बड़ लग रही है। आप अभी fanatical आप मिले नहीं हो, obsessions. क्या बोलते हैं शैडो भाई, आप मिले नहीं हो ना अभी। राहुल भाई आए थे और मोदी भाई आए थे, तो वो दो से मिले नहीं हो आप, इसका मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। Mr. Nagato had an interest in collecting to begin ऐसा with. क्यों? The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, सार्थक भी मिल amassing लिया। more and more possessions, even as he put himself in grave debt. जहाँ F2P वहाँ वेले भाई, मैं F2P प्लेयर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हूँ मैं। तो भाई ये सार्थक के पास C2 नोवेलेट है। C2 नोवेलेट, इसका क्या मतलब है? So what should we do now? ये Go तो down अच्छी and बात है take ना, a पर look?
step back. लॉन्डो के पास होना चाहिए. I'll open the door and take a look inside. That's dangerous. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. हीट टू नरेट होने का घमंड है. अरे अच्छा, ऐसी बात है. ऐसी बात है क्या? ओके ओके, समझ गया मैं. कौन राहुल? शैडो भाई देखो है ना, इनोसेंट मत बनो, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है. तो भाई स्टोरी पे ध्यान दो, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा कुछ. वही ना यार भाई, गगन भाई मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ बट मैं, ये लोग कुछ एविडेंस वगैरह ढूंढने आए यहाँ पे. वी कैन मूव नो क्लोजर टू द You ट्रुथ. needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. You need to worry, both of us have faced far greater dangers than this. हाँ, What's down there? कुछ तो होने वाला है गाइस, कुछ तो होने वाला है. कट सीन है. Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. So in the end, it was just a That was too scary. scare. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us. जय आना कब बोले ये गगन, ये जय नेगेटिव पीआर करवा रहा. अरे सार्थक बहुत रिच है, इसके पास 2 आईफोन 15 है. अरे भाई साहब, सार्थक भाई क्या बात है. हैं, अमीरी, फुल टू अमीरी. इसीलिए भाई, इसीलिए. ओ समझा मैं. आई गॉट इट नाउ. दिमाग की बत्ती जली. 25 लाख दिया है मैंने. हैं? जय भाई किस बात का? नहीं भाई, मैं तो अभी आया हूँ कोचिंग से. देखो All we शैडो can do भाई, now is keep searching in the direction that ये the बात मत बोलो आप Tatarigami मेरे को. energy source left this place. ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है. Two ordinary humans, entangled और with पता its नहीं क्यों मुझे Tarigami. बहुत ज्यादा, एक तो रॉकस्टार भाई पे I और एक fear आप पे much शक होता है. misfortune has already पर befallen them. आज तक पता नहीं लगा पाया कोई भी इस रहस्य के बारे में कि ये जो लोग, ये जो एनोनिमस लोग आते हैं ना एकदम से चैट में, वो हैं कौन. क्योंकि पिछली बार छोटा भीम और चुटकी आई थी, उसके बाद राजू आया, नहीं कालिया आया, उसके बाद राजू आया, उसके बाद ये सब हुआ. फिर आज अलग अलग पार्टी वाले आ गए मेंबर्स. ये चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. और इसका पर्दाफाश मैं करके रहूँगा एक दिन ज़रूर आएगा वो. Yes, क्योंकि मैं let's सीआईडी go. टीम से हूँ. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. इतना रिच होके सुपर चैट नहीं करता कंजूस इंसान. सार्थक भाई क्या बात करो, गगन भाई को ऐसा मत करो यार. बताओ, फ्लैक्स किया है आपने, फिर देखो फ्लैक्स करने के बाद चैट में, उसके बाद आपको करना चाहिए था उनको. सार्थक सुपर चैट कर मेरे को, बिल्कुल अभी करना चाहिए. अब भाई ये फ्लैक्स दिखाया है, मतलब बनता है ये तो. फिर T2 नोवलेट है, करा पास. सच में भाई मैं नहीं हूँ. Quiet your mind and focus ठीक on है what शैडो you भाई, sense around वैसे you. भी चैट में जो Perhaps you बोलता too है will perceive its वो हम मान ominous लेते हैं. presence in the wind. जो आप बोलोगे हम वो भी मान लेंगे. ऐसा ही होगा. एस्केप हो गई है. फॉलो द सेंट एंड लुक फॉर क्लूज. हाँ, मुझे तो खुशबू नहीं आ रही. मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही भाई. कौन सा सेंट है? अरे ये धुआं आ रखा है. पर मैं पहले 500 सब्स आज तक किसी को सुपर चैट ना करने का घमंड है ना गेम में. तेरे को करूँगा कोई ना. अरे भाई ओके, दिस इज बिजनेस गाइस. बिजनेस की बातें चल रही हैं. हम थोड़ा सा
अनफोकस हो चुके हैं अभी स्टोरी पे से, क्योंकि बिजनेस की जहाँ बात आ जाती है तो देखना ही पड़ता है ऑब्वियसली। From this हाँ point, नशे हो the गए भाई, trail ये appears कौन सी to सेंट split थी? into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Two parts of wood that correspond to. Quite possibly. Let's search the area. गूगल पे कर दे, मैंने सिस्टम ऑन किया है भाई ये। ओ भाई बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कहीं से तो आएंगे है। अगन भाई ओपी बिजनेस माइंडेड। You're acting really strangely. आप भी कॉमर्स वाले हो क्या? Something seems to be drawing their attention. Let's take a वेट, closer look. अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है भाई, वैसे नहीं है बाएं हाथ का खेल, क्योंकि ये असेंशन करने के बाद, रैंक असेंशन करने के बाद मेरे को थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। सस्ते नशे क्या करें भाई, मैं वो कह रहे हैं सेंट फॉलो करो, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ना यार, ये सही कह रहे हैं या मुझे भटकाया जा रहा है। Here comes the catch. मेरे को 50 रुपीज़ से बिलो के करगा तो स्ट्रीम पे गाना बजेगा, मैं तेरे हीरो 100 से ज़्यादा के पे बेबी डॉल मचोलेगी आ रहे। ओ भाई अब समझ में आया ये लोग इतना क्यों प्यार करते हैं गगन भाई से, हैं? फैंटेसीज पूरी करवा रहे हैं भाई, वो फैंटेसीज पूरी करवा रहे हैं It's भाई। ये अलग ही चीज चल रही है आज, ये हो क्या रहा है? Ugh. Look at this red stuff. लगता है मुझे एक आइडिया मिल गया है फिर, What is it? मैं भी यही काम चालू करूँगा बिजनेस, और फैंटेसीज पूरी करूँगा लोगों की। बोलो क्या करना है, फेंको मेरे पे पैसा। 500 कर कुछ जुगाड़ करते हैं आपके लिए अरे भाई by the looks of it, a letter written on a ये piece कहीं of अलग ही जा torn रही है बातें। clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. क्या मिला है हमें नोट में? आई एम नगैतो, आई वॉज वाउंडेड बाय एमेनोमा यूया, ही took my most precious blade. I chased him but could not catch him. I lay down here to rest, and on account of my exhaustion I thought that I might croak right here. My stomach kept on bleeding, but it seems that some strange power has sustained me. Why did he steal the blade? I was going to sell it to him. He even burned my warehouse down. भाई ये तो बहुत गलत किया भाई, बहुत गलत किया। It hurts, but for some reason I can't fall. Unconscious, so all I can do to direct from the pain right what will happen to Sashiko, Yuichi and Yuji. I'm sorry to them, I really am. Only now do I realize how stuck in my way I was and how blind to my obsession. I must have been cursed. I collected all those strange and things, bizarre things, sorry, but they won me not on iota of happiness or warmth. Put all of it together, and it still would not have been worth a single word from her mouth. Thank you and sorry for letting you down, Sashiko. Okay. काफ़ी बड़ा नोट है, समझ में कुछ आया नहीं, पर ठीक है। पर इतना समझ में आया कि हाँ कुछ फाइट चल रही थी और कुछ तो अनवांटेड सी चीज़ जो आ गई थी उसके आसपास, वही है। और फिर क्या हुआ? ब्लीडिंग हो रही थी उसको, ब्लीडिंग हो रही थी। 1 मिनट, सार्थक पेटीएम भी ऐड कर देता हूँ, गाना चलेगा सत्तू भाई, रहने दो वरना फिर कोई और फैंटेसी हो जाए पूरी। शैडो भाई
शैडो भाई की फैंटेसीज मुझे लग रहा है सबसे पहले पूरी करनी पड़ेगी। इनको ज़्यादा आइडियाज़ हैं। जय के लिए कोई नहीं कंपेयर कर रहा हीरो से। जय नल्ला। अरे टाइम्स व्हेन गगन आस्किंग अगला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा है। ओके। कोई ट्रांजैक्शन ऐप यूज़ नहीं करता अभी तो 18 का हुआ। अरे अभी मेरे पैन कार्ड बनेगा। ये According भी to ठीक है this भाई, letter, ऐसे बच a सकते हैं हम। मैं तो conflict छोटा सा हूँ arose भाई, because मेरे पास कहाँ Ameno से आएंगे पैसे। Mayuya wanted to seize a blade belonging to मैं तो Mr. छोटा हूँ Nagato. अभी, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। Yuya started ये the अकाउंट fire मैं that भैया का destroyed यूज़ the कर रहा हूँ, warehouse and wounded गेम Mr. वाला भी। Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. सत्तू भाई मैं बहुत गरीब हूँ, विलेज में रहता हूँ, टूटा घर में कलर तक नहीं हुआ सालों से, घर में आता तक नहीं आता। ये So, लाइनें चुराई गई हैं। where is मैं he? बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये लाइनें चुराई गई हैं, He was not only बस mortally ऐसा wounded, but also under the heavy ऐसा मुझे लग influence of रहा है, Tatarigami. पर मैं ऐसा कह नहीं रहा Add हूँ to कि ये that लाइनें the कहीं से fact चुराई that गई है। Exora seems to have ये attracted a किसी horde of monsters, and क्या I'm बोलते हैं, afraid he may no longer be with शॉर्ट us. शॉर्ट वीडियो या इंस्टाग्राम रील की नहीं है ये लाइनें, Whatever मुझे traces पता there है। may have been of his fate beyond इट्स ट्रू। after this point, और मेरे साथ they've भी since सेम been सीन है भाई, disturbed by the hilly churls. बिल्कुल There's एकदम nothing more सेम for us to सेम है। find here. 23 ईयर के हो आप, क्या बात है। देखो भाई लॉन्डो को सब पता है, उनको आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता है। दे नो Yes, एवरीथिंग, दे right आर now we स्पाइस need to इन uncover माय some more चैट। important truths. If Amenoma Yuya is attacking other गरीब people हूँ सत्तू भाई, indiscriminately, मैं then the गरीब longer हूँ। we take to find him, the भाई more मेरे people साथ भी risk सेम meeting सीन the है, same tragic end. पर अ, काफ़ी एक क्या बोलते हैं, ऊपर वाले ने कृपा की है। मेरे झोपड़े पे ये पीसी फेंक के मारा है। उन्होंने कहा जा स्ट्रीम कर, दिन रात मेहनत कर और तेरे पास पैसा आएगा, ऐसे आशीर्वाद दिया मुझे, तो मैं वही कर रहा हूँ। Right. So let's get moving. थोड़ा हेल्प कर दो, कुछ ज़्यादा नहीं 2-5 लाख दे दो। अरे ये पीसी मेरा ऊपर से टपका है, मेरे भी जेब खाली है बिल्कुल। अभी लिटरली मैं मैं कैसे बैठा हुआ हूँ कच्चे में। वो तो अच्छा हुआ मैं कैमरा है नहीं मेरे पास, नहीं तो लोग देखकर डर जाते कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और I कम टू wouldn't दिस, be surprised ज़्यादा if मैं he डिटेल too बता नहीं fell सकता prey मेरी to the हालत की, बट influence of वही the है, Tatarigami. समझ जाओ। आपने ही बताया 10 बार। तब मेरा कह रहे हो क्या, मेरा कह रहे हो क्या जय भाई? अच्छा मेरा कह रहे हो क्या, तो मैं, हाँ मैं तो हूँ भाई, लेकिन मैं बच्चा बनने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पैसे की बात आती है तो मैं बच्चा बन जाता हूँ, क्योंकि बच्चों को पैसे मिलते हैं ना, देना नहीं पड़ता। 70 के वर्थ पीसी बिल्ड कर रखा है भाई, चिल्लरें जोड़ी हैं, लोगों से इकट्ठा किया है पैसा, अब चिल्लरें वापस देनी भी हैं। For a practitioner of the martial इधर arts, उधर से the इकट्ठा किया है easiest पैसा। desire to inflame would be their अभी मैं pursuit of डेप्ट में further हूँ। power and skill. All the ओ clues भाई, that at first seemed disparate and disconnected. I have a hypothesis that, if it's correct, not only मैं तो शॉप पे explains the जाके भी यही series करता of हूँ भाई, events लौंडे आते हैं, leading मैं to कहता the हूँ two मैं men's छोटा बच्चा हूँ भाई। disappearance, भैया क्या but बात कर also रहे हो आप, zeroes in on the attacker's भैया क्या identity. बात कर रहे हो, आप पे करोगे पहले आप, Wait. मैं You ये बोलता figured हूँ। it out? So these two cases are connected after all? अरे कौन से 2 केसेस कनेक्टेड हो गए, मैं तो I देख ही नहीं believe पाया। so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm on with the search. We must stay vigilant. At any ओके, point now, we may find ourselves in बहुत danger. करीब है। चलो मैं क्वेस्ट कंप्लीट करने चलता हूँ। ओके जय भाई, कंप्लीट करो क्वेस्ट, मज़े करो, एंजॉय करो, बाय बाय। Rhythm is a name
कीप फॉलोइंग द सेंट। यार ये सेंट फॉलो क्यों करवा रहे हैं? खुशबू तो आ नहीं रही है इसमें। खुशबू तो आ नहीं रही भाई सेंट की। पर अरे 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 स्पेस नहीं दबा भाई, You ये want to स्पेस use नहीं my दबा, ये hat चीज़ें हो as an जाती है ना फिर। umbrella? Huh. ये The गेम भाई audacity to even make गलत है, that ये कुछ तो request. इसमें गलत है कुछ तो भाई, कुछ तो गलत है। हाँ ये देखो ना, अब सही जा रहा हूँ मैं। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार तो मैं चैट देखने लगा था, 1 मिनट। क्या लिखा है? कल ही एक अपार्टमेंट खरीदा था। क्या बात कर रहे हो गगन भाई? एक अपार्टमेंट खरीद लिया आपने? ओ भाई, फिर तो आना पड़ेगा यार, सेटअप वेटअप लेके आना पड़ेगा, वहाँ पे मज़ा आएगा। अपार्टमेंट पे मज़ा आने वाला है फिर तो। ओके बाय। ओके गगन भाई, फिर मिलते हैं, मज़े करते हैं साथ में। भाई ये सेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ बस मैं, ये मेरे साथ पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ये गेम ही नहीं है भाई, गेम ही नहीं है ये। You want to use my hat as an अच्छा मैं umbrella? क्वेस्ट पे पहुंच गया डायरेक्ट। The audacity to even... वो मुझे, ओ मैं शॉर्टकट मिल गया मुझे। He seems to have stayed here for a long time. अपार्टमेंट पे शैडो भाई, समझ गए। अपार्टमेंट पे मस्ती होगी सिर्फ, कुछ और नहीं। Why here? Is there anything special about बस कुछ this बातें place? होंगी और कुछ नहीं होगा। I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may Just have lingered here chit at chat, several different points in time. लिटिल बिट। Show yourself. It's no use hiding anymore. कौन है साला, कौन छुप रहा है? अरे ये वही है भाई, ये वही है। Haide Harakazua. It's you, at last. ये फॉलो कर रहा था भाई, ये हम पे नजर रखे हुए था। So it is the same guy from before. What's Okay. your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenome Yuya that stands before us. बातें, सिर्फ बातें होंगी शैडो भाई। But what if instead of सिर्फ facing बातें होंगी। Amenome Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? मुझे नहीं लगता, कुछ और भी होगा। अब मुझे डर लग रहा है शैडो भाई से। शैडो भाई को कुछ ऐसा तो नहीं पता जो Now मुझे that नहीं you पता। mention it, it is giving off a अब मुझे strange डर लग रहा है, light. मेरे गहराइयों के राज तो नहीं इनको पता है। Oh, whoa! Surely you don't mean... Are you शैडो भाई से बच के serious? रहना पड़ेगा मुझे। Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse भाई। for many years, affecting his ये state of ब्लेड कब दे रहे हैं mind, मुझे? and more recently using the sale as a means to affect, or rather, as a means to occupy Amenoma Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and भाई मुझे तो dreams. यही शॉट मिल जाए, ये जो चमक रही है सामने, बढ़िया लग रही है ये मिल जाएगी क्या? As a descendant of the इसको मार के मिल जाए तो Kaidahara बढ़िया है यार। you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end,
All he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. पहले तो शक था, अब कंफर्म हो गया है। शैडो भाई कहीं सीआईडी से तो नहीं हो आप? He was a bladesmith of great renown, a master of his भाई मैंने बहुत craft. बड़ी There गलती was कर दी nothing लगता that है। he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. शैडो भाई काम पे लग चुके हैं, And sure enough, डिटेल in the निकाल रहे हैं end, वो। he achieved what he had बस अब set डर रहा out हूँ to कि do. क्या चीज़ पता है इनको। All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. अलोन लेजी गेमर, हेलो ब्रदर, वेलकम टू द स्ट्रीम। पर ये अलोन लेजी गेमर, ये तो मैं ही हूँ। मैं आलसी हूँ, अकेला हूँ और गेमर भी। ये तो भाई बिल्कुल भाईचारे वाली वाइब आ गई एकदम से। यस, यू गेट दिस सॉर्ट। अच्छा, ओ भाई साहब, He not only चाहिए फिर तो bestowed भाई। upon me the greatest of strength, but also लड़ते हैं endowed फिर me तो। with a consciousness of my own. अरे सीआईडी को ट्रेनिंग मैंने दी है। In her ओ भाई conceit, साहब, the Raiden ये Shogun तो बच के lost रहना not पड़ेगा। only the single most perfect blade in the entire world, ये बात but मुझे नहीं also पता थी। an irreplaceable पर कैसे achievement पता in the होती? art of blade forging. ये एकदम खुफिया एजेंट के थ्रू मिली होगी ना इंफॉर्मेशन। Swords can मैं become बेचारा कैसे ही समझ पाता। conscious and control people? अस ब्रो अस, वही ना भाई। यार क्या बताऊं मैं। The people of the ऐसे time ही in which लोनली I was गेमर्स हमारे born साथ never believed I जुड़ते had हैं that kind of power. डिस्कॉर्ड पे They और saw फुल me as मस्ती a करते mere हैं। blade, a तो sharp आप भी and ज्वाइन करो well-crafted डिस्कॉर्ड, one, but in शायद आप all पहले other से ही होगे, respects an ordinary weapon. और नहीं हो तो लिंक दी हुई है, मैंने But that पिन की है। gave me the जाओ, opportunity to ऐसे ही take हमारे लोनली action. गेमर्स एक साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये देखो शैडो भाई भी उनमें से एक है। अभी बोलेंगे अस भाई अस। After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. एकदम मेरी वाली बात कर दी है, Moving तो from one ऐसा बोलेंगे। person to the next, I controlled the minds of countless hosts फिर हम लोनली along नहीं the रह जाएंगे way, लेकिन। each bringing me one step closer to my ancestral home. बस इतना होगा। I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये। अभी इसको एक फटका मारेगा ना काजुआ, Ah, चुपचाप अपनी so स्वॉर्ड दे देगा Amenoma इसके हाथ Yuya में। was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. अरे इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कह दी भाई इसने। डिस्कॉर्ड पे आने के बाद कोई अलोन नहीं रहेगा। वही ना शैडो भाई, डिस्कॉर्ड पे आने के बाद सारे अलोन गेमर अलोन अलोन रह के गेमिंग कर लेते हैं मजे से। Haide Harakazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. पर वहाँ पे क्या है, अलोन तो ठीक ही है, लोनलीनेस वाली बातें ज़्यादा होती हैं। और समझ रहे हो ना लोनलीनेस से मेरा मतलब क्या है। तो उस चीज़ में बहुत साथ देगी अपनी चैट और अपने डिस्कॉर्ड के लौंडे सभी। और जैसे ही ये एक मैसेज पटकोगे ना इसी नाम के साथ, तो वैसे ही लोग तुरंत आ जाएंगे, बोलेंगे भाई अस ब्रो, वही सेम चीज़ जो मैं बोलता हूँ। Give your body over ये to तो me. ये तो अपने में से ही कोई है भाई।
ग्रेनेस का कुत्ता बना देगी वही ना भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी। अरे काजुआ था मेरे हाथ में, रुको, चेंज कैसे कर दिया भाई। अरे वाह, काजुआ से खेलने को मिल रहा है भाई, हाउ लकी आई एम। अरे पर ये तब भी भारी पड़ रहा है। ओके समझ गया मैं, ऊपर उड़ते हैं और नीचे आते हैं तब भी डैमेज आता है, नीचे से उड़ते हैं तब भी डैमेज आता है, आते हुए जाते हुए डैमेज ही डैमेज देता है ये। अरे पर ये झटके क्यों खा रहा है भाई, रुको गलत जगह पर हूँ। अरे 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 रुको भाई, मुझे लगा ये मार देगा पर लगता है मेरी स्किल्स नहीं है। अरे ये करते हैं ना भाई, मार ले, ले मार। Join me and sever that divine life. Quietly now. You deserve अब गया ये, अब इसने मेरे को गुस्सा दिला दिया है। बहुत हो गया इसका। Do not stand in my way, or I will strike you down too. ओके You're lost, fooling no one. You've lost. Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Okay, then we will smash you into The pieces. end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. ये इसको देख के लगता नहीं है ऐसी बातें करती है, ये लगता नहीं है, इसमें सूट नहीं करते ऐसी बातें, पता है। और ये बेमतलब में चढ़ी रहती है, इसको पता नहीं क्या रहता है भाई। गुस्सा देखो इसके चेहरे पे, गुस्सा देखो जरा, And even if I कमाल का were गुस्सा to है। lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते भाई। Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. अरे कोई आ रहा है मेरे पास। But from your स्टोरी के movements, बीच में ऐड I आ गई। sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his Okay. deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that Okay. regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner, now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. You were trapped. काजुए समुराई। हाँ वही ना भाई, अभी बताएगा वो इसको अच्छे से। थंबनेल का आज का थंबनेल भी वैसे ही कुछ है। After all the time that's passed, you have grown weak. अभी To the point that की you बैंड are बजाएगा now वो। unable to acquire a new host हालांकि without मुझसे हैंडल नहीं making हो रहा था, physical वो बात अलग है। contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. तो फाइनली What of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you.
You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. Use Bennett and Kazuha. Okay. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life, even if you were to sever that divine light. Is this truly the outcome that your maker would have desired? Okay. You. भाई गुस्सा दिला दिया इसको बस. Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool. I अच्छा जी. must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have समझ no में नहीं आ रहा भाई need इसको of अभी भी. anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. ठीक है आओ देख लेते हैं भाई. This बच्चे के point हाथ will में गन दे start दी you तो वो बहुत further. उड़ रहा है. Descendant of the वैसा ही वाला Kaidahara सीन है. clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. हाँ बस इतनी सी बात. इतनी बात तो हम रियल लाइफ में नहीं करते. हाँ भाई. How stubbornly you stick to वही your ना. wayward path. भाई ये माहौल वो ऐसा नहीं है भाई. मूड बनाते हैं ये लोग. माहौल बनाते हैं भाई एक दूसरे का. गर्म हो जाते हैं अंदर से फिर धोते हैं अच्छे से. I do not वही believe for सीन a है. second that you can challenge the वो बोलते almighty हैं ना कि भाई shogun पहले in तू your हाथ लगा current के दिखा state. फिर तू हाथ लगा के दिखा. So let us make नहीं a नहीं bet, पहले तू हाथ लगा. and I will put your लड़ना नहीं है strength बस to the हाथ लगा के test. दिखा. वही वाला सीन है. Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to माहौल cross बनाते हैं गर्मा गर्मी blades. का. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. अरे ठंडा पड़ गया भाई माहौल तो. This is a risky This strategy. is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't मिला do कुछ this, he'll होगा बूम forever बम. be the Blade's puppet. The और नहीं. cursed Blade's strength is हो currently गया very जितना होना weak, था. and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I... Even so, Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. अरे वाह कितना ट्रस्ट भाई इसकी आंखों में देखो. इतना भरोसा. इसकी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सोचा नंबर 1 ब्रांड साथ We में have है. a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Your All disdain right, for me fine. betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn now. ठीक है. शॉट दे रहा है क्या ये? दे दे भाई. हाँ हाँ ये मिल गई शॉट. ये हुई ना बात. अरे ये क्या हुआ पर? Kazuha? क्या झेल नहीं रही I'm क्या? okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. Levi voice actor and both are same.
It's all right. क्या बात कर रहे So हो रॉक्सा far, भाई? this was as I expected. If something feels off, let me know immediately. हाँ डॉक्टर है ना तू तो. I will. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a Okay. minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. That should fit the well. All right. Please lead the way. What Hote. about Amanuma Yuya? What should we do with him? The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. ये ट्रैवलर बोलता भी है. Shadow I roasted. Traveler. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay. गूंगा है भाई, इशारों में बात करता है Careful. ये ट्रैवलर. क्वेस्ट कंप्लीट फाइनली. हमें स्वॉर्ड कहाँ गई? अबे स्वॉर्ड मिल गई ना हमें कि नहीं मिली? नहीं अच्छा अभी एंड हुआ नहीं है इस क्वेस्ट का. जाना है पहले तो. हाँ हाँ वॉइस लाइन कम है. वॉइस लाइन कम है हाँ ट्रैवलर की. Kamisato, I'm coming. Quit following me. बहुत ऊपर नहीं दे दिया इनने. ब्लेड टेस्टिंग वाली जगह पे ले जा रहे हैं ना अभी हम. ओके ओके. ये कौन सी जगह है भाई? अरे वाह सीक्रेट सीक्रेट. सीक्रेट जगह है ये. Leave everything on this journey to me. ओके boom bam. भाई स्वॉर्ड ये है ना, ये है ना अपनी स्वॉर्ड. One with nature. ओ मजा आ रहा है भाई. स्वॉर्ड देखो एक बार. स्वॉर्ड दिखा दे. वाओ कमाल की है. ये यही ब्लेड यूज करता है क्या हर बार, या फिर ये सिर्फ उसमें है, स्टोरी में है बस? As one with wind and cloud. बहुत तगड़ा मारा. ओहो मजा आ गया भाई इसको पीसी में खेल के. Feeling. You okay? अरे कुछ I'm ना all हुआ. right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Though he's Okay. making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. ओके आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Let's keep going. समझने में टाइम लग रहा है उसको थोड़ा सा. बस स्टोरी में है. अच्छा
भाई रियल में होना चाहिए था भाई, इतनी तगड़ी स्वॉर्ड ऐसे चमकना चाहिए कुछ तो। एक मिनट, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा ना? चेस्ट कैसे भूल रहा हूँ मैं? यहाँ कहीं चेस्ट तो नहीं थी? हमें तो मेन मोटिव तो हमारा वही है ना यहाँ पे आने का। हमें क्या मतलब स्वॉर्ड वर्ड से भाई? कहाँ है प्रीमोज मेरे? नहीं दे रहे क्या ये सप्लाई? अरे अरे ये तो रही यार, कतई अंधा हूँ भाई। क्या यार, यहाँ तो मतलब यहाँ से ऐसा सीधा निकल गया मैं। यहाँ थी वो, यही तो चाहिए बस। यहाँ तो कुछ नहीं रह गया। इनको बाद में देखेंगे, तुम बैठे रहो अभी, है ना? हम जरा Time to go. Let's get down to टेस्ट ढूंढ business. लें। नहीं यहाँ नहीं है, चलो कोई ना। My blade! Into the wind! अरे वाह, इफेक्ट आया, Xenomorph! फायर का इफेक्ट आया। यहाँ यहीं पे रहूँगा मैं। ओहो, रेडियन का वेपन है। ओह हाँ वही ना, मुझे लग रहा था कि कहीं देखा देखा सा लग रहा The है। wind knows me. Clouds high. The birds call. ओ भाई, कितना मस्त सीन था ये। Something's up with the blade. क्या सीन था ये, मजा आ गया। ओह, व्हाट्स I गोइंग can ऑन? sense that his strength is slowly fading away. The blade is ये becoming कमाल का था more भाई, and एक more साथ जो difficult गिरे हैं for ना me to वो। wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would ओ they do to भाई, Amino Mayuya? एक्साइटिंग। I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal. मूवी वाला सीन हुआ था भाई, मजा आ गया। शाइन करता है, शाइन करता है हाँ। एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं, कहीं स्पॉन तो नहीं हो गया, कहीं मैं भूल रहा हूँ। नहीं है यहाँ पर भी। अरे देखो, मैं गलती से गिर गया। अरे बड़ा वाला आ गया राक्षस। Taste my blade. अरे रुक जा भाई, मैं चेस्ट ढूंढ रहा हूँ भाई। कि स्वॉर्ड भी काफ़ी बड़ी है यार। Fall before कहीं मिला नहीं, चलो ठीक है, लड़ लेते हैं इससे थोड़ा सा। Into the wind. थोड़ा हीट इफेक्ट भी आने दो इधर, इधर आ जा। me. फायर वाला इफेक्ट। One with nature. ओ ये भी तलवार चलाना जानता है। Into the wind. और मेरी स्किल्स, Time to go. मेरी स्किल्स थोड़ा सा वो है, जंग लग गया है, पर धीरे धीरे शार्प कर रहा हूँ मैं। Time to go. आजा आजा। Fallen leaves. गया Adorn my तो ये। night. ये हुई ना बात। Are you okay? It looked like you मेरे were माहौल चल ही रहा है struggling अभी। the entire fight. Yes. ऐसा क्यों? And it मेरे को looks तो like नहीं he's लगा ऐसा। reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. The wear and tear is sever. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. भाई ये तो But the कचरा हो long गई। journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy.
Will he listen to I you? finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. ओके, सबके अपने अपने प्लान्स है भाई. But regrettably, we are nothing alike. का साथ देने का कोई तो I will रीजन never है. understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Here they are! Take them down! ओके, और आगे. Where do they keep coming from? You shouldn't fight with this blade anymore. Yup. We can help this time. Don't आजा worry. भाई. I'll use my own blade. वही ना It's भाई. just more of the same. It's my lucky day. The wind knows. उसमें लाइट जल रही थी, इसमें नहीं जल रही है. पर इफेक्ट तो सेम ही लग रहा है. उसमें नियॉन लाइट लगाई थी ना इसमें. Into the wind. ये नॉर्मल वाली चीजें हैं. पर कोई नहीं. पूरे एलईडी जला ली. डरा रहा था साला हमको. हमको डराएगा ये. Way better with your own sword. प्रैक्टिस है भाई उसकी You स्वॉर्ड से are a उसको. true Kaedehara in flesh and नहीं? in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. इसकी क्या टाइम लिमिट रहती है क्या स्वॉर्ड की? ये जल रही है अभी, थोड़ी देर में यूज कर लिया तो फिर नहीं I जलेगी. thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Actually, Okay. this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. Forging and maintenance are both important for a blade, but they Okay, are alright, not alright. everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? Okay. I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? बेचारा उदास है. हमें पहले लग रहा था कि ये कुछ
I believe our bet is now settled. गड़बड़ करेगा पर I have nothing further to say. Where Okay. are you going, Kazuha? He now has पर ये तो neither खुद the ही मजबूर है ability भाई. nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. Give him some time to reflect and okay. Kazuha become blacksmith. Okay. 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 चलो When I touched maybe the इस hilt for the first time, क्वेस्ट के हम एंड में आ चुके हैं. it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. Soon make 5-star sword into 4-star sword. हैं? डाउनग्रेड क्यों करेगा पर A ये? bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. Okay. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the Blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. He spent Okay. the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. काजुआ है. He felt intense regret at being tricked by काजुआ the है ना Fatui, blacksmith. but he could never again return to his homeland. His Bladesmith. sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. Story. But after that, the blacksmith's intentions were warped by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Oh, Right. okay. So yeah. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. अब कहाँ जाना है भाई? Listen to what Curse Blade has to say. अच्छा इससे बात करनी है. क्या बोलता है भाई? When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Amenoma Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. It has to be done in this order. At least hear what I have to say.
And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. उधर गया भाई अब ये मैं बिल कर रहा Alas, है. after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Oh, अच्छा. and who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. एक मिनट रुकना गाइज. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. मैं बस इसी का तो वेट कर रहा था. ये जो चीज़ है ना, सिर्फ इसीलिए मैं इनकी बकवास बातें सुन रहा था और कुछ नहीं है. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई. रीमोस दो तुम तो बढ़िया तो बोलते हैं असली माल. फुलफिल द कर्स ब्लेड विश. क्या विश है भाई? ये विश पूरी कर देते हैं. चलो ये में भी आखिरी काम है इस क्वेस्ट का. लेट्स गो. लेट्स गो रॉकस्टार भाई. लेट्स गो. विश पूरी करते हैं. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. That was a much more relaxed Yep, occasion. we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? हाँ भाई हम तैयार हैं. Ready? करना क्या है? चलो. Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedahara Kazuha. Successor आ of जाओ. Amenoma art, Amenome Yuya. ये हुई ना बात. अब होगा ड्यू. Honored to cross blades with बेहतरीन. you. It is my honor also. दोनों ऑनरेबल हैं भाई. लड़ क्यों रहे हो फिर? Time to go. मेरे हिसाब से तो नहीं लड़ना चाहिए. One with nature. जब भाईचारा हो ही गया तो पर ठीक है. भारी पड़ रहा है रे. Into the wind. फ्लैश मारता. फ्लैश एकदम से. अभी रेडी रहेगा मैं भाग जाऊंगा यहाँ से. Fine.
One with nature. अब ये भागेगा, आ गया। ये ऐसा समुराई वाली जो वो होती है ना एक सीरीज, लाइक क्या बोलते हैं, समुराई वो हल्का सा शॉट निकालता है और एकदम से कचाक, हमें शॉट दिखती भी नहीं है। ये देखो, हमें शॉट दिखती भी नहीं है और फटाक से वो स्पीड से सामने वाले को ढेर कर देता है। ओके आ जाओ भाई, मैं भी वही करूँगा। इधर क्या, अबे भाई इसकी क्या है ये, दिखा ही नहीं वो तो। One with nature. Time to get into the wind. गया। Thank you for the experience. एक्सपीरियंस ले रहा था भाई, इतने मार खा के ये एक्सपीरियंस ले रहा था। Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. यू लाइक समुराई? भाई क्यों नहीं, बिल्कुल, समुराइज भी खतरनाक होते हैं। और पुराने टाइम की स्टोरीज, और जैसे कि मैं पहले फैन था जैकी चैन वगैरह, ये सब हीरोज़ वगैरह की वो देखा करता था मूवीज़। तो उसमें भी वो लोग समुराई वगैरह के जो वो रहते थे ना, कन्फू वगैरह हो गया, ये समुराई वाली मूवीज़ हो गई। और समुराई की पहले बहुत एक, याद होगा यूट्यूब एक्शन आता था, अभी भी है शायद, उस पर मूवीज़ आती रहती थी। पर वो मूवीज़ HBO पर आती थी बहुत सारी, समुराई वाली। तो वो फिर यूट्यूब एक्शन पे आने लगी, और अब तो हम कहीं भी देख सकते हैं साइट्स पे जाके। तो वैसे समुराई वाली जो फीलिंग आती थी वहाँ पे, जो उनकी पूरी एक स्टोरी हुआ करती थी, और ऐसे ही एपिक सीन हुआ करते थे उसमें। और मैंने काफ़ी वो क्या बोलते हैं, एनिमे में भी देखा है कि इनका एनिमेशन बहुत तगड़ा होता है, ये जो एकदम से रुक जाते हैं, फिर ये जो फाइट होती है, वो सीन भी तगड़ा ही होता है यार। His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. ये एक्सपीरियंस ले रहा था कुट पिट के भाई। There are a few things that I shall leave him to tell you himself. ट्राई सेकिरो, सेकिरो मैंने सुन रखा I है यार, must देखते हैं। apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. अरे ब्लेड बोल रही है ये भाई। Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can Ugly go wish back है there ये। What together. does he Okay. want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. चलो भाई, ये आखिरी विश है, में भी चलते हैं वहाँ पर भी, ये आखिरी विश पूरी करने। इसमें तो वाला एरिया है वो। वहाँ से डायरेक्ट भी तो जा सकता था यार मैं। और पता है ये समुराइज की ना एक चीज़ और बढ़िया लगती है, इनके जो म्यूज़िक होते हैं ना, वो It's Yuya! मज़ा आता है। You have returned. I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. आप क्यों नहीं खेलते पीसी गेम्स भाई? किसने बोला नहीं खेलते? खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। पर क्या है ना कि स्ट्रीम करने के बाद मेरे अंदर एनर्जी नहीं बचती, और मैं ज़्यादा स्क्रीन देख नहीं पाता हूँ यार। और मैं देखना भी नहीं चाहता, मतलब समझ रहे हो, ये इन सब चीज़ों में लगा रहूँगा। मैं कोई एक चीज़ कर पाता हूँ एक टाइम पे, फिर रात में भी वही है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है चीज़ें। तो मैं वही है, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं वो भी करूँगा। और संडे का देखते हैं प्लान क्या रहेगा, कुछ और खेलेंगे।
कुछ और करेंगे इस पे, कोई सा अलग ही गेम खेलेंगे तो A टेंशन नॉट। prized Ishin blade, turned weapon that स्टोरी वाले भी controls the खेलेंगे human और वो भी mind. खेलेंगे आगे, और आगे सारी चीज़ें रहेंगी। Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. और मेरे को पहले पहले भी ऐसा नहीं है, बहुत बहुत पहले से खेल रहा हूँ यार मैं, बचपन में भी बहुत शौक था मुझे खेलने का गेम्स वगैरह। स्टोरी, खासकर स्टोरी भी काफ़ी मज़ा आता था, जिसमें स्टोरी अच्छी होती थी। प्रिंस ऑफ पर्सिया जिसमें से एक सबसे बेस्ट गेम लगा मुझे, इसकी स्टोरी काफ़ी कमाल की थी। आईजीआई बढ़िया था। ये तो हमेशा ही याद रहेंगे दोनों गेम। But I have some good news as well. Ryuji from the Bonton Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. कल ना, कल मतलब कल संडे है क्या? कल संडे है। ओके, Really? देखते हैं। Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. हाँ संडे And he है। assures me that he won't use my body for ओके anything समझ रहा हूँ nefarious. सर भाई। कल देखते हैं फिर, कुछ नया खेलेंगे। I have decided to let him do it. रात को हम ग्राइंड तो करेंगे ही थोड़ा थोड़ा, बाकी सुबह देखते हैं क्या। मे बी सुबह जल्दी स्ट्रीम करूँ मैं। Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? बस मुझसे पहले हाबलत भाई आके बैठ गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा भाई। फिर तो वो जो उनका गेम चल रहा था वो भी कमाल का है, वो देखना ज़रूर, मज़ा आएगा। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरे को तो मैंने 1 खेलने की कोशिश की थी, वो वाला क्या नाम है उसका, वॉच डॉग। बट वो ये कि वो लैपटॉप में ढंग से चला नहीं, बहुत लैग मार रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार, जब पीसी बिल्ड हो जाएगा तो मैं ये सारे स्टोरी गेम्स करूँगा, काफ़ी मज़ा आएगा। फिर मैं करूँगा, स्टोरी गेम्स भी करेंगे अपन, टेंशन नॉट। और अभी के लिए इसकी स्टोरी मैटर करेगी। द डिसीजन इज़ योर्स। Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please. मंत्र मंत्र फूके गए। My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything. You mean Yes, the cost is my entire consciousness. हाँ, ओके, इसके अंदर आ गई आत्मा। You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin Okay. art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives ये on, sword करवा रही है and its इससे। finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove स्मिथ its की आत्मा करवा रही है worth भाई। to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, ओह, it will still fulfill his final wish. अच्छा ये विश थी। ओ भाई, Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. ओ भाई, Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. ओ भाई कमाल हो गया। ये तो लाइक वैसी रेड रेड सी हो गई है उसका जो कॉस्ट्यूम है।
वैसे ही सब मैं जॉयस्टिक का वेट कर रहा That's why he said it had to कर be done in that order. रहेगा तब खेलूंगा स्टोरी गेम्स। ये हुई ना बात। आपलट भाई तो लिटरली अपने क्या बोलते हैं अपने घर से वो भी लेकर आए थे। वो उनका रिमोट कंट्रोल यहीं पड़ा हुआ है बट वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। फिर घर पे उनने पूछा कि क्या सीन है तो वही है कंट्रोलर वो दिक्कत देता है। कनेक्ट ही नहीं हो रहा था वो। बहुत पुराना कंट्रोलर है। अभी नया लेकर आएंगे थोड़ा और चिल्लर इकट्ठी कर लें उसके बाद देखते हैं। 3 4 स्टार सॉर्ड पर भाई मुझे नहीं मिली ना। मुझे ही मिली है क्या? वो तो काजुआ को स्टोरी में मिली है ना रियल में थोड़ी ना मिलेगी। His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It seems like वो deep पता है down he लिटरली disapproved इतना of his own एक्साइटेड थे actions, ना आपलट भाई इसको and thus chose क्या to बोलते हैं bury गॉड ऑफ वॉर this को खेलने name के लिए deep within his heart. कंट्रोलर पे। वो घर गए और उनका घर बहुत दूर है यहाँ से। कुछ काम से गए थे वो फिलहाल बट वही है वहाँ से लेकर आए कंट्रोलर। और फिर वो यहाँ चला नहीं भाई। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल के देखे उसके पर वो कनेक्ट नहीं हुआ भाई। पर ठीक है देखते हैं। पुराना कंट्रोलर है बहुत। Only in हाँ the बहुत final पुराना है। moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. मिलेगा कॉर्ड मिलेगा मुझे। Seems like he really, really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. पर पता नहीं क्यों यार मुझे पता है 600 में मिल रहा है सिंक पुट वाला कंट्रोलर। मेरे को पता नहीं क्यों कंट्रोलर पे इतना मज़ा नहीं आता। मैं बचपन से ना यही है कीबोर्ड पर ही है मेरा हाथ सेट उतना। तो मेरे को कीबोर्ड पर ही मज़ा आता है। कंट्रोलर पे तो बस वो वीडियो गेम्स के टाइम पे थोड़ा मज़ा आता था। बाकी कीबोर्ड पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कीबोर्ड और माउस। Speaking for myself, बाकी I'd वो rather गेम्स जो see him रहते हैं ना जो जैसे recognize कि and atone for डब्ल्यू his डब्ल्यू ए हो गया mistakes वो हो गया than see him punished for them. कुछ ऐसे फाइटिंग्स वाले गेम्स उनमें मज़ा आता है मेरे को। बाकी वैसे मज़ा नहीं आता। बाकी सारे तो ये इसी से मज़ा आता है मुझे। कंट्रोलर पता नहीं क्यों उतना खास लगता नहीं है यूज़ करने में मेरे को। पीसी में कनेक्ट नहीं हुआ कि गेम में नहीं चला। पीसी में ही कनेक्ट नहीं हुआ। उनके भैया से पूछा था उनके बड़े भैया हैं उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि यार वो बहुत टाइम से ऐसे ही हो रहा है वो दिक्कत दे रहा है और वो नहीं होता कनेक्ट। बहुत पुराना है। देखो मैं 1 मिनट देखता हूँ यहीं पे छोड़ के गए हैं अभी। उसका नाम क्या है? क्वांटम का है कोई सा। क्वांटम का है आ, हाँ क्वांटम का कंट्रोलर है पुराने वाले जो पुराने क्वांटम के चलते थे वही है। ये वाले मैंने भी देखे हैं। मैं पहले यहाँ पे पीएसपी खेलने जाता था तो ये कंट्रोलर रहते थे। PS2 PS3। पीसी में कनेक्ट ना आरपीजी वाले गेम्स कंट्रोलर में नहीं जमते। यस अगर कंट्रोलर हो तो दे कैन प्ले पीएस गेम्स ऑल्सो आई थिंक। हाँ वो तो है ही। मैं एंडल रिंग ट्राई किया ना हो पाएगा विदाउट कंट्रोलर। हाँ वो कुछ गेम्स हैं मतलब जो I कंट्रोलर पे लाइक understand. इजी पड़ जाते हैं। Perhaps this is a flaw in my कंट्रोलर से कुछ चीज़ें इजी पड़ personality. जाती हैं। I've always been captivated by grand aspirations. जैसे कि GTA 5 में ना कुछ जो ऑनलाइन जो रेसेस होती हैं उसमें उसमें भी यही होता है कि कंट्रोलर पे वो इजी होती है और कीबोर्ड पर बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कीबोर्ड पे इजीली हो जाती हैं और कंट्रोलर पे बहुत दिक्कत आती है। बट जिसका हाथ जिस पे सेट हो वो तो फिर खतरों का खिलाड़ी है भाई। गाँव से वैसे भी नहीं चलता गॉड ऑफ वॉर न्यू वाला। Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, मैंने just डार्क as the सोल 3 sight of those who fought कीबोर्ड to से कंप्लीट repeal the किया है। Vision Hunt decree did. ये कौन सा कीबोर्ड है भाई? Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the डार्क same सोल 3 way. कीबोर्ड से। अच्छा डार्क सोल 3 गेम का नाम है समझ गया। After everything क्या I've ही सोच रहा seen, था मैं। perhaps these pursuits हाउ fascinate me सिली a आई little एम। more than they should. Oh, Kazuha. कभी कभी
सेंटेंस will इधर उधर हो continue जाते to हैं. support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. थैंक यू. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. ओके. कंप्लीट नहीं हुआ भाई. ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा यार? डार्क सोल 3 बेस्ट कीबोर्ड डैम. ओके ओके ओके. अबे ये क्या झटके लग रहे हैं भाई? ये किसने मारा मुझे? हेलो. ठीक है. accompany Kazuha while he gives Goju Kajima his response. अच्छा जी. Too slow. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. रेडन होगी हाँ? Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? ये क्या है? ये क्या है? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. Okay. I see. I understand. I The understand. Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not... You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well, I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, Okay. if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's pretend. assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. कैप्टन बेडो के साथ बहुत घूमता है भाई ये. As for my next destination, let's see where the wind takes me. ले जाए जाने कहाँ हवाएं ले जाए मुझे कहाँ. चलो भाई, इसको जहाँ हवाएं ले जाएंगी ये वहीं जाएगा. फाइनली. You must have a whole bunch of questions after our last conversation with Nahida. Paimon was ready to ask her a million more questions, but didn't want to seem too pushy. फाइनली क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है. अरे Descenders. So, बोल ले भाई, तू does बोल that ले just पहले. mean people like you who come traveling to Teyvat from someplace else? And as for your brother, whew, so many questions. Let's go find Nahida and see what else we can find out. ओके तो फाइनली ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है. और ये आर्कन क्वेस्ट खुल चुका है हमारा. तो मे बी ये हम करेंगे कल का पता नहीं. और ये क्या है? तो ये हम करेंगे. नॉटी हो रहा के काजुआ बेडुए के साथ. वही ना भाई, बेडू के साथ भाई कुछ तो करने वाला है ये. पर ये भी एक सीक्रेट है. इसके लिए आगे की स्टोरी को जानना चाहिए.
जानना पड़ेगा There's no such thing as pure और freedom वेट in करना this पड़ेगा world. हमें आगे की स्टोरी के लिए, Even the और wind कुछ नहीं कर cannot go सकते। on forever. फिलहाल के लिए हमें ब्लेड मिल चुकी है। ब्लेड को ज़रा एक बार देख ले। अरे कहाँ, ये है ना, ये वाली 4 स्टार। ओके, तो ये किस काम की है? ये किस काम की है? ये काम की है भी? ट्रैवलर हैंडी स्वॉर्ड, ये थोड़ा सा कुछ सेम सी तो नहीं है, बट ये किस काम में आती है? ये दोनों अलग अलग हैं। इसको मैंने 20 कर रखा है, 1 मिनट। ठीक है, अब जो भी है, किसी ना किसी कैरेक्टर पे तो सूट करेगी वो। देखते हैं, आई होप कि बढ़िया ही हो। चलो, हाँ, गुड फॉर काजुआ। अरे काजुआ होना भी तो चाहिए। काजुआ को ही देंगे, बट काजुआ जब आएगा तो उसको भी पुल करेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या हमें वो मिलेगा। वो तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है गाइस, मिलते हैं रात को। बाय बाय अभी के लिए। और ऐसे ही आर्कन क्वेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, अगला हम जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगा वो हम खोल देंगे। और एक चीज़ तो रह ही गई। मैंने ये, अरे कहाँ गया कमीशन? हाँ, ये कलेक्ट कर लिया था ना। कमीशन जाके एक बार कलेक्ट कर ही लेता हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगा। जूम आउट। ओके, ये कलेक्ट कर लेते हैं पहले, Quit following me. और फिर ऐसे ही क्वेस्ट हम करते रहेंगे। पर कल के लिए देखते हैं कुछ नया Ad Astra Abyssosk. ढूंढेंगे। खेलने के लिए बहुत सारे गेम है, बस Thank वही you है, for completing today. खेले कौन सा? और नेसेसरी के हिसाब से जो भी हमें लगेगा क्वेस्ट वो हम कर लेंगे, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने काजुआ की स्टोरी एंजॉय की होगी। एंजॉय की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक You देना। think I've got a बाकी sharp मिलते हैं tongue? गाइस रात को, I just tell it like it है ना। is. एक If मिनट someone रुको, can't handle it, ये बहुत बोल रहा था, बहुत बोल रहा था ये। अब ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं रात में। Honey, I'm perfect. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I wanna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain way, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated.
These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm kinda live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say enough, it gets ingrained.